he acquires equally from all partners. ये एक चेंज उधर ये स्टेटमेंट उन्होंने डाल दिया, उस पे ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया. Now our new ratio cannot be 9:6:3:6, क्योंकि यहाँ पे बोला है he has acquired equally. He has acquired equally from old partner. मतलब ये जो D's शेयर है 1/4, उसका इक्वल पार्ट उसने ए के पास से लिया, बी के पास से लिया, सी के पास से लिया. मतलब उसने हर एक के पास से कितना लिया है, तो 1/3 लिया है. 1/4 का 1/3 हर एक के पास से लिया, इक्वल रेशियो में लिया है 1:1:1:1. तो ये जो उनके पास से उसने लिया, ये उनका सैक्रिफाइस है. याद रखो, सैक्रिफाइस दिया है हमको. ए, बी एंड सी का सैक्रिफाइस दिया है, इज इक्वल टू 1/12. तो आप देखो कहीं पे रफ में करके देखो, 1/12 plus 1/12 plus 1/12 is equal to 3/36. बराबर है. तो that would give you 1/12 again. तो ये डी ने हर किसी के पास से लिया है. सॉरी, 3/12 होगा, 3/12 एंड ये हो जाएगा 1/4. सी उसका शेयर हो जाएगा 1/4. तो D's share was 1/4. So acquired from A, B and C, 1/4 into 1/3 is equal to 1/12. Is that okay? तो अभी आप देखो, आपको 12th स्टैंडर्ड का एक लॉजिक पता रहेगा, that sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio. तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं. ये न्यू रेशियो को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, is equal to old ratio minus sacrifice ratio. Can we say that? Can I modify this equation? Have you understood this equation? खाली उनके प्लेसेस मैंने चेंज किए. कोई डाउट है कि इस इक्वेशन में आपको? अभी therefore A's new ratio is equal to, A का ओल्ड रेशियो क्या था 3/6 माइनस A ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12. A ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/12. I can convert this 6 into 12, right? तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं. Doing direct calculation, 6 minus 1/12.
5/12. Do you want me to show this separately? ये 6/12 कैसे हो गया? Do you want me to explain that? अरे कुछ बोलो, सुनते हो? Okay. B's new ratio is equal to 2/6 minus 1/12 is equal to 4 minus 1/12 is equal to 3/12. C is a new ratio. 1/6 minus 1/12 is equal to 2 minus 1/12 is equal to 1/12. These share we have 1/4. तो उसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए multiplied and divided by 3 is equal to 3/12. So the new ratio A is to B is to C is to D is equal to 5 is to 3 is to 1 is to 3. Is this calculation clear to all of you? Okay. अभी A is to B is to C, 3 is to 2 is to 1. B is admitted for 1/4 share. D is admitted for 1/4 share. Only A and B contribute towards D's share. Calculate new ratio. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे only A and B contribute towards D's share. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है कि डी के लिए सी ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया. सी हैज नॉट मेड एनी सैक्रिफाइस. सैक्रिफाइस किसने किया? मैंने और आपने, है ना? नींद सैक्रिफाइस करके 9 बजे 9:30 बजे लेक्चर में आ गए ना. किसने सैक्रिफाइस किया? ए एंड बी ने सैक्रिफाइस किया. अगर कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस किया वो तो हमको बताया नहीं है. तो इन दिस केस जब ये बताया नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? ओल्ड रेशियो. मतलब क्या था? ए एंड बी का इक्वल नहीं एजम्पशन करना है. गलत एजम्पशन है पार्थ मेहता. क्लियर वर्ड देखो कैसा बता रहा है, कंट्रीब्यूशन. तो पार्टनर जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो अपने ओल्ड रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हैं. जो कुछ भी रहेगा वो इक्वल कर लेते हैं जब डीड इज साइलेंट. यहाँ पे डीड साइलेंट नहीं है, रेशियो है उनका. समझ रहे हैं? पार्थ, इज दैट क्लियर? तो अभी
कंट्रीब्यूशन, और कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ए एंड बी। तो ए 1/4 का 3/5 कंट्रीब्यूट कर रहा है, समझ रहा है? एंड बी 1/4 का 2/5 कंट्रीब्यूट कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये लोग उतना कंट्रीब्यूट कर रहे, सैक्रिफाइस कर रहे, कंट्रीब्यूशन, और आई कैन से सैक्रिफाइस। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 3/20, एंड बी ने सैक्रिफाइस किया 2/20। इज दैट क्लियर? Therefore, A is a new ratio. यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इधर जो था ना, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो A का ओल्ड रेशियो था 3/6 माइनस A का सैक्रिफाइस रेशियो है 3/20। तो देयर इज नो, I cannot convert this 6 into 20. तो यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इट इज 60 माइनस 18/120, 42/120। कोई डाउट? P's new ratio is equal to 2/6 minus 2/20 is equal to 40 minus 12/120 is equal to 40 minus 12, 28/120। C ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, तो उसका 1/6 था, but to equalize it to 120, multiplied by 20/20 is equal to 20/120, और D का 1/4 था, multiplied by 30/30 is equal to 30/120। Therefore, new ratio A is to B is to C is to D is equal to 42 is to 28 is to 20 is to 30. They can be reduced. All of them are divisible by 2. 2 21s are, 2 14s are, 2 10s are, and 2 15s are. 21 is to 14 is to 10 is to 15. Is that okay? समझा सबको? ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताओ। A, B and C. A, B and C are partners sharing. Hello, am I audible to you? Okay. A, B and C are sharing
profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. 3:2:1 respectively. D is admitted as new partner. D is admitted as new partner and the new ratio was 5:3:2. 5:3:2. Calculate sacrifice ratio. I want you to calculate. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। So now I'm going to concentrate on treatment of goodwill. Remember, in admission of partner, goodwill is having the basic two treatment. Basic two treatment of goodwill.
1 brought in cash. मैं दो अलग अलग कलर से लिखूंगा. Not brought in cash. Brought in cash, कौन कैश में लाएगा गुडविल? न्यू पार्टनर. एंड नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर. तो जब वो नॉट ब्रॉट इन कैश रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज रेज्ड. गुडविल इज रेज्ड, दैट इज गुडविल इज क्रिएटेड. वो कैश में नहीं लाया, इसके लिए उस गुडविल को क्रिएट किया गया. अभी जब हम बात कर रहे हैं ब्रॉट इन कैश का, तो brought in cash, goodwill when brought in cash is divided into two parts. When goodwill is brought in cash, it is divided into two parts. One, retained, withdrawn. Retained मतलब रखा. रखा, बिजनेस के अंदर रखा. क्या रखा बिजनेस के अंदर? तो बिजनेस के अंदर उन्होंने रखा जो कैश आया था, गुडविल का जो कैश आया वो उन्होंने बिजनेस में ही रखा. और दूसरा मैंने बताया विड्रॉ किया. तो जितना गुडविल आया था कैश में, उतना कैश वो पार्टनर्स ने विड्रॉ किया. मतलब एक पार्ट है कि उन्होंने वो कैश बिजनेस में रखा, दूसरा पार्ट है उन्होंने वो कैश ड्रॉ किया. तो जब रिटेन्ड रहेगा तो इसके कितने पार्ट रहते हैं आप सबको पता है, 12th में आपने पढ़ा रहे. When goodwill is brought in cash and retained, तो इसके कितने पार्ट रहते हैं? How many parts we have? 2 parts. Very good. कौन कौन से 2 पार्ट रहेंगे? A, first part, goodwill brought. First part, goodwill brought. अभी गुडविल उसके कैश में लाया तो कैश कम्स इन एंड therefore cash account is debited. So I will write cash or bank account debited to, उसने गुडविल का पैसा लाया टू गुडविल अकाउंट. दूसरा पार्ट, जैसे ही ये गुडविल हम लोग कैश में लाते हैं, that goodwill is to be distributed. So the second part is goodwill
डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका जर्नल एंट्री रहेगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है that this distribution should always be made in sacrifice ratio. Should always be made in sacrifice ratio. ये दो पार्ट रहेगा, और जब विड्रॉन रहेगा तो पहला पार्ट goodwill brought, entry would be cash or bank account debited to goodwill account. दूसरा पार्ट सेम, goodwill distributed, एंट्री उसका रहेगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें तीसरा नया पार्ट रहेगा गुडविल विड्रॉन। गुडविल विड्रॉ हुआ तो इसका एंट्री रहेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो ये गुडविल का एक फर्स्ट पार्ट ट्रीटमेंट हो गया, गुडविल ब्रॉट इन कैश वाला। अभी आज मैं इसके आगे डिस्कस नहीं करने वाला हूं, इसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस एंड द सेकेंड पार्ट we will discuss but in our next lecture. तो आज हमने जितना पढ़ा उसके अंदर आपको कुछ डाउट है तो पूछो। विड्रॉन में कोई रेशियो नहीं रहता है, विड्रॉ जितना उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ उतना विड्रॉ होता है, विड्रॉवल में रेशियो नहीं रहता है। खाली हमको ये देखना है कि पूरा विड्रॉ किया है क्या नहीं विड्रॉ किया। समटाइम्स द प्रॉब्लम सेज पार्टनर विड्रॉन 50%, कभी एंट्री में सपोज ए एंड बी ओल्ड पार्टनर थे, उनको 10,000 मिला, सपोज देयर सैक्रिफाइस रेशियो वाज इक्वल, तो उनको 10,000 मिला, तो उन्होंने अगर 50% विड्रॉ किया है तो सी एंट्री में 5,000 आएगा। इज दैट ओके पार्थ? डिस्ट्रीब्यूशन में रेशियो इंपॉर्टेंट है ना कि विड्रॉवल में।
Any other doubt what we have discussed today? उसके अंदर कोई doubt है? Okay, so I find no person is typing. Any doubt? Let me conclude up with the session for today. Okay, that's all for today. Bye. Catch you later.